Hi friends, in this session we'll start with the group number 14, that is carbon family. So first of all, which are the elements present into this group number 14? So group 14 includes carbon, silicon, germanium, tin, lead and fluorine. First part is all about abundance. Carbon and silicon are most abundant element in a earth crust, whereas germanium occur only as a trace. Tin and lead also occur in a small quantity. Only carbon occur in a free state as coal, diamond and graphite. In a combined state as carbonates, only CO2, petroleum, natural gas. Silicon is the second most abundant element after the oxygen in earth crust. Forms of silicates and silica. Germanium found in a trace, in coal and in certain deposits. An important constituent for making a conductor and transistor. Germanium is generally used as an N-type and P-type of semiconductors. The important ore of tin stone, that is SnO2. Lead is found from a galena, that is PbS, PbSO4 and PbCO3. Among these, carbon and silicon are non-metals. Germanium is a metalloid and tin and lead are the soft metal. So a general characteristics down to the group metal characteristics increases. Topmost family member carbon is a non-metal as well as silicon. Germanium is metalloid. So this is all about your introduction to this group 14, that is carbon family. Next point is all about electronic configuration. As we already discussed in group number 13, likewise group number 14 general electronic configuration is Ns2 and P2. So here in case few family members and their electronic configurations are shown: carbon, silicon, germanium, tin and lead. It's 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2 and series goes on and on and on. So the valential electronic configuration of this element are Ns2 and P2. The inner core of electronic configurations of element in this group also differs. Next we move on to this covalent radius. Basically it's a atomic radius and ionic radius, but generally here in case there is no cation, there is no anion, just because this full family having 4 electron in outermost shell, so they cannot convert into +4, they cannot convert into -4. So that's why they always share electron, and due to this group 14 is also known as covalent family also. Both atomic radii and atomic volume increases gradually on moving down to the group due to this effect of extra shell being added from member to member. The atomic radii of group 14 elements are there corresponding to this group number 13 elements due to the increase in nuclear charge in the same period. There is a considerable increase in covalent radius from carbon to silicon. Thereafter, silicon to Pb, a small increase in a radius is observed. So दोस्तों एक चीज याद रखिए कि टिल कार्बन एंड सिलिकॉन वी डोंट हैव इंटरवेंशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट जैसे ही नीचे आएंगे जर्मेनियम, टीन एंड लेड, एट दैट टाइम इंटरवेंशंस ऑफ डी ब्लॉक एंड एज वेल एज पीबी के अंदर तो 4f भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. देखिए 3d10 4d10. So after this noble gas configuration, directly we don't have ns2 and np2. 10 elements are there, then 4s2 4p2. 10 elements are there, then this 5s2 5p2. और lead के अंदर तो 14 elements of 4f, then 10 elements of d, then s and p. So due to this there are some changes observed when you go for down to the group. Means carbon से silicon तक थोड़ा सा सेम रहेगा, बट जर्मेनियम, टीन एंड लेड के लिए बहुत सारी चीज चेंज हो जाएगी. लास्ट लाइन में वही उसका जस्टिफिकेशन लिखा है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d and f orbital in this heavier elements. Heavier elements means down to the group family की बात कर रहे हैं.
सो होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा इन कोवेलेंट रेडियस. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Ionization enthalpy. The first ionization enthalpy of group 14 member is higher than the corresponding member of group 13. Now once again, what actually means by ionization enthalpy? Minimum energy required to remove one electron from outermost shell is known as ionization enthalpy. The influence of inner core electron is visible here also. The general ionization enthalpy decreases down to the group. Obviously, why? Because size increases, and due to this, nuclear to outermost shell electron distance is also increases. It is really very easy to remove electron from this outermost shell. Small decrease in ionization enthalpy from Si to germanium and to Sn. Slight increases to Sn to Pb is consequently just because of poor shielding effect of interventions of once again D and F block elements. So down to the group चले जाओगे, size increase होती जाएगी, but there is sudden increase in Pb. क्यों? क्योंकि 4F के 14, then D के 10, and then you have this element, and due to this that is a little bit change over here. Then electron negativity. Due to the small size, the element of this group slightly more electron negative to this group number 13. The electron negativity from silicon onwards is almost constant, shows comparatively smaller decreases due to the screening effect of D10 electron and elements from germanium onwards. The electron negativity values of elements from Si and Pb is almost same. Next, melting point and boiling point. The melting point and boiling point of group 14 elements are however higher than their corresponding group number 13. Why? ऐसा क्यों हो रहा है? Just because due to the formation of 4 covalent bonds on account for 4 electron in their valence shell, which resulting strong binding force between them of atoms in a solid as well as in liquid state. So in case number group 13 के अंदर valence shell में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3. And due to this, few elements are ionic in nature, remaining family member are maybe covalent in nature. But here in case, just because of 4 electron in valence shell, almost they have a covalent characteristics. Next is most important point, anomalous behavior of carbon. Carbon is found different in many properties from the rest of the family member of group 14. This is because once again same point, small in size, high electron negativity, property of catenation, absence of d orbital in it, and due to this few physical and chemical properties are differ from remaining family member. Many a time in school examination this question asks, give the 4 or 6 anomalous behavior of carbon. तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हो. जैसे पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन आर वेरी हाई एज कंपेयर टू दिस रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर. नेक्स्ट यू पुट इनटू दिस पॉइंट नंबर 2, कार्बन इन इट्स डायमंड फॉर्म इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. दैट्स व्हाई डायमंड इज यूज्ड इनटू दिस एब्रेविएशन पर्पसेस. ग्लास और बहुत सारी मेटल को कट करने के लिए जो यूज होता है कटर, उसके आगे टिप पे डायमंड होता है जनरली. It has maximum tendency to show the catenation. कार्बन के पास टेंडेंसी है catenation की. कार्बन has allotropes also. Down to the group germanium, tin and lead के पास तो allotrope भी नहीं है. Carbon has high tendency to form p-pi multiple bond with other elements like nitrogen, oxygen and sulfur. कार्बन के साथ भी multiple bond बना सकता है. You never found Pb triple bond Pb, but you found C triple bond C alkyne. C double bond C alkene, C single bond C alkane. So C double bond C alkene, alkyne, C double bond O ketone, C double bond S, C triple bond N, and many more. Heavier elements do not form p-pi bond because their atomic orbital are too large to diffuse to have the effective overlapping. Most important one marker question. Carbon can convert it into p-pi bond, but remaining family member like Sn, Pb does not undergoes p-pi bond. Why?
This is the answer. Carbon is not affected by the alkali, whereas the remaining family member react on fusion. For example, silicates Si plus 2 NaOH, half O2, you get Na2SiO3, that is sodium silicate plus H2. So this is all about your physical properties. Now we move on to this chemical properties. और chemical properties जैसे ही start करेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका oxidation state. Just because oxidation state से ही हम उसके सारे के सारे chemical reactions arrange कर सकते हैं. So without wasting much time, let's move on to this first part of chemical property is oxidation state. So let's start with oxidation state. Presence of 4 electron in outermost shell of this element reveals that member of this family can gain 4 electron and forming +4 or -4 ion to show ionic nature, or exhibit tetravalent covalent nature by sharing of 4 electron pairs in order to attain a stable configuration. एक सिंपल सी बात, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन. मीन्स 2 आप इनर ऑर्बिटल के निकाल लीजिए तो वैलेंस शेल के अंदर हुए 4. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे एंड कन्वर्टेड इनटू C+4, देन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. और जो अगर 4 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ऐड कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. सो दैट्स व्हाई दिस फैमिली मेंबर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू +4, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू -4. मींस स्पेसिफिकली कार्बन की बात कर रहा हूं. डाउन टू द ग्रुप +4 -4 की जगह पे +2 -2 भी फिजिबल है. +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है. किस हिसाब से? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होगा? NS के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो विल गो हेड. द फॉर्मेशन ऑफ +4 और M-4 ions require huge amount of energy which is normally not available during this normal course of reaction. Therefore, this element usually do not form +4 and -4 ion. Perfect justification मिल गया आपको. But they usually form compounds with the covalent of 4. So that's why their covalency is 4. Germanium, tin and lead also exhibit +2 oxidation state due to this inert pair effect. Sn+2 and Pb+2 shows ionic behavior. The tendency of +2 ionic state increases in moving down to the group just because of inert pair effect. Means कार्बन +2 नहीं देगा, सिलिकॉन जनरली +2 नहीं देगा, बट जैसे जैसे नीचे चले जाओगे आफ्टर जर्मेनियम, टिन एंड लेड हैज टेंडेंसी टू गो फॉर अ +2 टेंडेंसी. कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4. व्हाई? जस्ट बिकॉज फर्स्ट लाइन में ही हमने देखा एक्सपांशन ऑफ डी ऑर्बिटल. कार्बन के पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो एक्सपांशन होगा ही नहीं. डाउन टू द ग्रुप चले जाओगे, जैसे जर्मेनियम, टिन एंड लेड सभी के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी अवेलेबल है, and due to this expansion can take place. Other elements of group can do so. It is because the presence of, most important, presence of d orbital in them, and due to this their halide undergoes hydrolysis and have tendency to form complexes by accepting the electron pair from donor species. For example, the species like SiF6-2, GeCl6-2, SnOH6-2 exist where the hybridization of the central atom is sp3d2. So this is all about your oxidation state. Next we move on to this reactivity towards oxygen. All the members when hit into this oxygen forms oxide. सो जनरल टेंडेंसी क्या होगी? ईच एंड एवरी कार्बन की ही एग्जांपल ले लीजिए आप. कार्बन प्लस हाफ O2 यू गेट CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन प्लस प्योर ऑक्सीजन दैट इज फुल ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो हियर इन केस दे फॉर्म MO and MO2 type of oxides. There are mainly 2 types of oxide, that is monoxide and dioxide, that is MO and MO2 respectively. SiO exists at a high temperature. Oxides in higher oxidation state of elements are generally more acidic than those of these lower oxides.
यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है द डाइऑक्साइड दैट इज CO2, SiO2 एंड GeO2 इज एसिडिक इन नेचर। तो आपको पूछेंगे नीचे दिए हुए स्पीशीज में से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। Whereas SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटोरिक। एक और एमसीक्यू बन गया, आउट ऑफ विच ऑक्साइड इज एम्फोटोरिक इन नेचर, तो यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन शायद होगा CO2, SiO2, SnO2 एंड PbO2। फाइन। अमॉन्ग दिस मोनोऑक्साइड CO इज न्यूट्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन। CO इज न्यूट्रल, GeO इज डिस्टिंक्टली एसिडिक, whereas SnO and PbO आर एम्फोटोरिक इन नेचर। तो आप सिंपली याद रखिए SN and PB दोनों एम्फोटोरिक है, आइदर मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। GeO इज एसिडिक, GeO2 इज एसिडिक, एंड यहाँ पे CO2 एंड दिस ऑक्साइड ये एसिडिक है डाइऑक्साइड, बट मोनोऑक्साइड CO न्यूट्रल है, वो एक चीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है ग्रुप वार्डिंग के साथ एक्सेप्ट टिन। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। टिन डिकम्पोजेस टू स्टीम टू फॉर्म अ डाइऑक्साइड। देखिए Sn plus 2H2O, you get SnO2 plus 2H2 is released. Lead is unaffected by water, probably because of the protected sheet of oxide film on it. So this is all about your reactivity water. Last topic discuss कर लेते हैं in this session में, that is reactivity towards halogen. So reactivity towards halogen, they form of two types of halide, which are they? MX2 and MX4. M stands for generally metals. Down to the group, the stability of MX2 is increases once again just because of inert pair effect. GeX4 is more stable than GeX2, while PbX2 is more stable than PbX4. This is due to this most important inert pair effect. Exceptions are SnF4 and PbF4, which are ionic in nature. Why? Just because fluorine is highest electron negative species and smaller in size. Due to this thing is happen. PbI4 does not exist because Pb and I दोनों बहुत बड़ी species है. Pb is also larger, I is also larger. Bond initially formed during this reaction does not release enough amount of energy to get 6s2 electron, and excited one of this electron goes to this higher unpaired electron state. Last, due to this absence of D, CCl4 cannot hydrolyze, while SiCl4 undergoes hydrolysis and gives silicic acid. बहुत सारे स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिसिक एसिड। जनरली किसी को याद नहीं आता है, क्यों? क्योंकि बहुत ही अननोन है। देखिए कैसे बनता है, SiCl4 देन H2O, H2 is nothing but H plus plus OH minus, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल गया और एक OH इंट्रोड्यूस हो गया सिस्टम में। ये देखिए लाइकवाइज फिर से H2 के साथ रिएक्शन कीजिए, HCl, HCl, HCl. In short, all the 4 Cl are replaced with OH and that structure is known as silicic acid. तो ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिसिक एसिड। तो याद रखिएगा SiOH, OH, OH, OH. So this is all about your first session of group number 14, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस ग्रुप 13 था, इसीलिए ये सारी चीज ऑलमोस्ट रिपीटिंग लग रही होगी आपको। नेक्स्ट इज अ फ्रेश टॉपिक, वो जो फ्रेश सेशन में स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैटेनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोपी और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट and Buckminster fullerene. So this is all about your today's session. Next session is really very important for your school examination concern. Thank you.